Good morning, guys. Good morning. So, guys, a quick update. We are now in the last batch. We were tracking about the FMCG sector when we started. Approximate in April, rather. Not even the last batch. The batch before that, we were tracking the FMCG sector, and I was bullish on the sector, um, saying that inflation is increasing and demand is moving towards rural area, etc., etc. So even in the previous batch, continuously there was something going on FMCG sector. Continuously there was some update. If you see, Aniket also was talking about FMCG, the consumer demand about yesterday. Every day there is something in the news which is coming up about FMCG sector. Now, according to my experience in the last 8 years, whenever I see a sector news coming every day in the newspapers, now it is coming from April. It is not that it is coming today. From April, I am tracking FMCG personally. I have told my students also to track FMCG. Okay, I have gone wrong on that. Uh, that okay, the sector hasn't performed, but it was I started at that time. I started in April. I must say, okay, so I have stocks like HUL, Imami, Dabur in my portfolio, very basic quantity, just to do research on it that what is happening in the sector. Okay, the market has gone up. FMCG sector haven't performed. What I came in today's news is the FMCG sector is down. People to log in this. FMCG sector is down approximate 9.8% this year. The entire FMCG because of the decrease in rural consumption, decrease in urban consumption, inflation increasing, and there are few reasons. Rural consumption is increasing. So today I got a data saying that even Aniket said yesterday, 2/3 of the consumption comes from urban and the 1/3 comes from rural. So now rural segment is growing at a faster pace than urban. The reason that urban is not growing is because of high inflation. Then one more thing I came to notice that it is about the this abnormal monsoon. So whenever there's an abnormal monsoon, the footfall decreases. Now, what do you mean by footfall? Footfall is people visiting the stores decreases. So the premium products, the sales have decreased in this last 2 quarters. So this has impacted the FMCG segment a lot. In the last 6 months, what are we doing is every day what we see in the news is some of the other product is launching. Someone is launching some premium product, someone is acquiring something. Some companies, are selling their non-operating business like HUL selling its the ice cream business. This all things are going. Now, what I feel from the last 6-7 months is that this sector is on a rotation. I feel I might be wrong over here. I was wrong from April to now. I wasn't wrong. I was just researching about it, that what is going on. Now, my student also the one who got job in a buy side firm. He also said the same thing in your interview that why do he like the FMCG sector a lot? Huh. It is just about saying why do you like. You might go right, you might go wrong. That's nothing to do with it. It is just how do you explain. Now, what I have seen overall is every day consumer demand. Today also there is a rural demand up, urban demand down. Reasons, global geopolitical and high valuation in the global markets. This is not a reason for consumer demand decreasing. Rural demand to improve continuously. Now, if I ask you others, those who have joined new, which are the companies which are focused on rural thing, specifically focused on rural? Let's start with automobile. Which is the company that is rural focused in automobile? Anyone? On the new batch. What do you think? Tanay, Suchit, Priya, Siddharth? Sir, there is a one tractor company named Escort Kubota, which sells low horsepower tractors. Tanay, your voice is not clear. I'm not able to hear you. What are you saying? Uh, there's one company named Escort Kubota. It sells low HP horsepower tractors. Correct, correct. So tractors, there is a data of tractor also. The tractor sales have improved. Yes. There's also a data that tractor sales have improved. Plus Hero, I think Siddharth mentioned perfectly. Hero is the one who has rural focus. Now, these are the stocks that you should focus on. There's even Eicher Motors who have a good hold in rural.
So these are the stocks, basically the ruler focus stocks, the fertilizer stock. The fertilizer stocks have done well in the last. You see this? I'll show you some fertilizer. I have this stock, but I don't know which stock to buy. I'm just saying the fertilizer segment is doing good. Obviously, why fertilizer segment is doing good? Because the rainfall was above normal. Chambal. This was the one I know was Chambal fertilizers. You see this moment? 288 to almost 500 in almost 40% growth in less than 1 year. Now it is declining, but now this is what is going on. The allied sector moves first and then the major sector moves. It is like, rural is growing, so people are buying in rural. Now, people, companies are saying that they are investing in new products, focusing on rural. Now, when Geo reaches or maybe Airtel reaches the Geo for that's your internet consumption. Now, when the internet consumption increases, obviously Zomato and Swiggy will also start coming in. So obviously Zomato is, so I am very much, a person who like that stock. Plus, I'm not betting on Zomato. I am betting on Reliance Jio. That okay, if Reliance Jio comes into the rural areas, obviously Zomato will grow because once everything is connected online, Zomato have started. If you go to your villages or maybe go to a place that that is turning into city. Now we are like staying in Mumbai. We are very close to Nashik. So Nashik was something like we go on a weekend trip or we have an Airbnb bungalow there. What I have found out is Nashik has no longer become be a a rural area. It's turned out to a city. Now people are looking at Nashik, then Pune. Okay, after Mumbai, we have to look at Pune now. Pune, and we are looking at Nashik. Accenture have opened their big hub in Nashik. So this is what is happening overall in the industry, and that is why I so this is how you start doing research on. This I like. You might be liking something else, but this is my thought process of getting into finding stocks. So we were finding stocks from last 6 months, I will say. Still, I am not in a position to say that okay, the price have increased. This stock might go up, this stock might go down, but I am will be there for long term. That I said I am bullish on HUL, I am bullish on Imami, I am bullish on Marico. XYZ reason. Reason might be anything. Whatever reasons you like. How do you say that this stocks I like, or what is the reasons that uh, why do you want to own this company in the long run, not in the short term? It's not about trading, not about you buy today and sell tomorrow. It's about holding a business. So what I'm doing is understanding the ecosystem of the business so that if anyone asks me, why you like HUL, the stock is not moving, I think fine. I am betting on this story. Sector is down, uh, stocks are declining. Do you think HUL will go down or will stop doing business? There might be some problems. So when I read books, Warren Buffett and the Peter Lynch book, what I Warren Buffett comments that when uh, people are fearful, be greedy. That is what a mantra I follow. People are fearful; they are not going on FMCG. And when you get good businesses at cheap prices, HUL is one of the best businesses having working capital negative. Imame is not a good business looking at its balance sheet and cash flows. But Marico, HUL, Dabur are, Nestle for that sense, are bigger players in that segment. They are having competitions, I know, but they have big pockets. They are debt-free companies. So in that fall, I will prefer, buy FMCG rather than go to some other sector of, which I don't know only what is happening. And plus with FMCG, I relate it to Hero, I relate it to automobile, I relate it to fertilizers, I relate it to something like tractor. Okay, tractor. Even Mahindra and Mahindra is there into tractors. You see, just look at Mahindra price. We say Mahindra is a competitor of Maruti. I don't feel so. You see the stock run up, same 1 year chart, 115 to almost double. Whereas you look at Maruti. Maruti is just 10,000, today is 11,000. Just a 10% move and flat the entire year. Why is this? There is something cooking up. Even HUL, you will say HUL is flat.
almost flat from last 1 year. Negative return. Does it mean this is a bad company? No, No. it doesn't make a bad company. It's just कि वो भी stabilized पे आ चुके हैं. Stabilize हो रहा है because Innovation obviously, sorry, innovations नहीं आ रहे हैं proper. मतलब innovations जितना नहीं आ रहे, but business बना go हुआ ahead, है sorry, business में. correct, correct. सो वही इफ यू निश्चित तुम भी अगर हमारे वीडियोस देखते हो लास्ट है ना, हम यही बात कर रहे थे एफएमसीजी के बारे में कि क्या हो रहा है अभी। ये सेगमेंट जा रहा है कंसोलिडेशन में, कि कुछ हो नहीं रहा है सेक्टर में, कुछ नए प्रोडक्ट आ नहीं रहे। अभी इन्फ्लेशन का डेटा है, इन्फ्लेशन एज 9%, तो वो इम्पैक्ट हो रहा है, उसको कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग फॉर एचयूएल, द सीओजीएस इज इंक्रीजिंग। आईटीसी का देयर वाज अ मार्जिन इंक्रीज ऑफ 400 basis point, क्रॉस मार्जिन सॉरी, cost increase of 400 basis point, gross margin declined by 400 basis point. That's a huge data. But do you think it will continue to increase? 40 का 44 हो गया, इसमें 48 होगा, यहाँ से डिक्लाइन ही हो रहा है। करेक्ट, व्हेन द कॉस्ट इज एट द हाई लेवल, द फूड इन्फ्लेशन एट 9%, डू यू थिंक फूड 15 होगा? 15 होगा तो इंडिया रिसेशन में आ जाएगा। फूड इन्फ्लेशन इज योर वेजिटेबल एंड सीरियल प्राइसेस। तुमको भी मम्मी को पूछो क्या हो रहा है, जस्ट आस्क योर मॉम डैड, नॉट इवन डैड, मॉम, what is happening in the cereal segment? Prices are तो rising. मतलब मेरा जो एक खुद का है, बिकॉज मैं कुछ कुछ साल पहले बाहर भी रही हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर एक ट्रेंड जो मैंने उस टाइम ऑब्जर्व किया था अपने खुद के कंजम्पशन से, जुलाई से लेके टिल दिसंबर तक, एक तो Hmm. बारिश और ये सीजनल की वजह से हमेशा कोई ना कोई आपका फूड प्रोडक्ट ऊपर जाता ही जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद एक न्यूज आती है वेयर हाउसेज में सामान पड़ा हुआ है और खराब हो रहा है. तो आई थिंक इट्स अ मोर अ कुक्ड अप वर्जन ऑल्सो, एंड समटाइम्स इट्स सीजनल प्रॉब्लम एज वेल, जो मेरे नहीं, को लगता है. I agree, it's मतलब a seasonal problem, but सीजनल seasonal problem प्रॉब्लम. ना 9% या नहीं होता कभी। अग्रीड, 9% नहीं होता है, बट आई थिंक सो कि विद टाइम मे बी, लाइक अगर हम 2-3 मंथ्स का वेट करें, तो वी कैन सी द चेंजेस आई फील. मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि चेंजेस आ सकते हैं, जिस मैंने जो पैटर्न अभी तक देखा है उसके हिसाब से. नहीं नहीं, सो क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस करेक्ट आफ्टर द हम्म. योर रेनी सीजन, या. बट इट सी लास्ट 3-4 साल से तुम देखोगे तो इन्फ्लेशन है डिक्लाइनिंग मोड पे था वो, बिकॉज ऑफ हाँ. कोविड डिमांड ही नहीं था। हम्म. तभी डिमांड बढ़ रहा है। सी जब डिमांड, सीरियल के प्राइसेस बढ़े तो डिमांड बढ़ रहा है ना। डू यू या. एग्री? अग्रीड. अग्रीड. इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन नहीं होना इज वेरी बैड। जापान, नेगेटिव इन्फ्लेशन, ग्रोथ ही नहीं है वहां पे। तो इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है, करेक्ट? अगर ग्रोथ हो रहा है तो ऑब्वियसली इट मीन्स देर इज समथिंग कुकिंग ऑन इन दिस सेक्टर। एंड ये हमेशा न्यूज में आ रहा है, तो मेरा यही पर्सपेक्टिव था कि हाँ, माइट बी, यू आर सेइंग माइट बी राइट कि ना हर बार होता है इन्फ्लेशन, तो वही हम ट्रैक कर रहे हैं ना। आई एम नॉट मेकिंग अ व्यू ऑन 5 months, आई विल ट्रैक दिस सेक्टर फॉर नेक्स्ट 1 year ऑल्सो, समझे? तब जाके आई विल मेक अ व्यू कि ये नेक्स्ट जुलाई में भी ऐसा ही हो रहा है क्या। तो आई एम कंटिन्यूसली फोकस ऑन ये सेगमेंट में क्या चल रहा है। हाँ, तुमने बोला इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, व्हाट आई एम सेइंग इज इन दिस सेक्टर दे आर कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट्स। अनिकेत तो मुझे रोज एक न्यूज बोलता है कि सर एफएमसीजी के भाई ये हुआ, कौन कॉल वो सुन रहा है, सर एफएमसीजी में लोग बोल रहे हैं ये एक्विजिशन कर रहे हैं, वो एक्विजिशन कर रहे हैं, मैन ग्रूमिंग में जा रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, ब्यूटी इज इंक्रीजिंग। तो ये ट्रेंड तो चेंज ही हो रहा है। दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग अ कॉन्ट्रारियन व्यू ओवर कि पीपल आर नॉट बाइंग मंथली फॉल्स इन लास्ट 6 years। तो अगर अगर मार्केट इतना डूब रहा है, मार्केट इज फॉलिंग डाउन, तो विच सेक्टर टू फोकस ऑन? द मोस्ट डिफेंसिव सेक्टर। एंड दिख रहा है रोज की रोज देयर इज समथिंग कमिंग अप इन द न्यूज़पेपर। वर्स्ट फॉल सॉरी इन द लास्ट 6 years, आई टोल्ड 6 months, लास्ट 6 years। आई विल से वन मोर न्यूज, ये एक फर्स्ट था, वो दूसरा कंजम्पशन डिमांड का था, मिंट में था। आई हैव शेयर द मिंट पेपर तुम्हारे साथ। ये रहा कंजम्पशन डिमांड में था, कंज्यूमर डिमांड इज डिक्रीजिंग, रूरल इज अप, अर्बन इज डाउन। तो फोकस कर रूरल फोकस कंपनीज पे, रूरल फोकस कंपनीज पे। कोई हीरो हुआ, फर्टिलाइजर्स हो गए, तुम्हारा स्कॉट्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। नाउ जब ये सब हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का सेटल होना चालू होगा, बिकॉज इट इज एट द पीक नाउ। 10 का 15 नहीं होगा, 12 हो सकता है। जस्ट वेट ऑन द राइट पोजिशन टू बाय, कि सर ये ऐसा होगा, देन आई विल
तो इसमें क्या होता है ना, व्हेन यू से समथिंग लाइक इन द इंटरव्यूज, उसको पता है कि तुमने सिर्फ वो फाइनेंशियल मॉडल्स नहीं बनाए, उसने सिर्फ तुमने सिर्फ वो क्या रिपोर्ट नहीं बनाया है, ऐसे बनाने को बना दिया है। यू एक्चुअली मीन समथिंग आउट ऑफ इट। ये सब जो बना है वो व्हाट इज द रीजन ऑफ मेकिंग दैट। एफएमसीजी क्यों चूज किया, एस्कॉर्ट से क्यों चूज किया, आइशर मोटर ही क्यों चूज किया, इतने सारे शॉक्स थे। फिर आइशर किया तो फिर हीरो क्यों नहीं किया, या हीरो किया तो फिर बजाज क्यों नहीं किया। सो आई हैव अ व्यू कि सर आई डोंट लाइक बजाज और आई लाइक हीरो बिकॉज सर आई एम लुकिंग एट दिस सेक्टर की क्या हो रहा है। आई एम लुकिंग एट सर रूरल का, हीरो का मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रूरल, 80% ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम रूरल। तो आई नो कि एंड रूरल सर रोज रोज न्यूज में आ रहा है कि रूरल सेगमेंट डिमांड बढ़ रहा है, रूरल सेगमेंट डिमांड बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ वाई इट इज इंक्रीजिंग, मानसून अच्छा हो रहा है, या फिर एमएसपी बढ़ रहा है। मोदी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द रूरल सेगमेंट करेंटली। आंध्र प्रदेश में यूसी कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं विद नीतीश कुमार, यूपी में भी अभी इफ द स्टेट इलेक्शन दे विन तो वापस यूपी में भी बूस्ट होगा। यूपी इज सेट लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट कंज्यूमर कंजम्पशन स्टेट इन इंडिया। वो हाइब्रिड व्हीकल्स का जो कट आया वो यूपी में आया है सबसे पहले। सो दे आर फोकसिंग ऑन रूरल, द एंटायर इकोनॉमी इज फोकसिंग ऑन रूरल, फोकस ऑन रूरल कंपनीज वर टारगेटिंग रूरल एरियाज। अर्बन छोड़ दो अभी, अर्बन में प्रीमियम ब्रांड्स, रेमंड दैट आई लाइक, जो भी प्रीमियम है अर्बन में, इफ इट्स अ मास सेगमेंट अर्बन में चलेगा ही नहीं। मतलब क्यों दिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा, दिख रहा है। ओके, okay guys, so that was from my point of view, wanted to tell you that how do I look at the stock as an analyst. That is the reason of having this morning calls every day, कि रोज रोज क्या चल रहा है। तुमको पता है इंटरव्यू में कभी कुछ पूछ लिया पहले का, यू एटलीस्ट हैव नो दैट, अच्छा इसने बोला था। मैं तो अनिकेत जो बोलता हूँ कभी कभी, मैं मेरे क्लास में जाके बोलता हूँ कि अरे आज मुझे मेरे स्टूडेंट ने ये बताया, अच्छा क्या व्हाट कि दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग, मेरा कभी कभी कोई न्यूज मिस हो जाता है तो ही टेल्स मी। So that is the reason of having this morning call every day. So others can also contribute. And तुमको कुछ अलग लग रहा है, you can always talk. मैं तो बता ही रहा हूँ, तुमको भी अलग लग रहा है। It should always be a two-way process. टीचर हो तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बात करूंगा, you should also, because this is not I will say not a teaching process. This is purely analysis. You might be right, I might be right, I might be wrong, you might be right. ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, हो सकता है। No one is right in the stock market. Even Warren Buffett is wrong. Even Rakesh Jhunjhunwala was wrong. तो तुम रॉन्ग जाओ इसका कोई टेंशन नहीं होता है। इट इज जस्ट हाउ यू डिफेंड योर सेल्फ, एंड इट इज ऑलवेज टू बी डिफेंडेड बाय डेटास। क्या हो रहा है, इफ यू सी, मैं जब भी बोलता हूँ आई ऑलवेज टॉक इन डेटा पॉइंट्स, कुछ तो एक डेटा लेके बोलता हूँ मैं। ये गिरा तो क्या रीजन था, वो 9.6% गिरा। अभी भी मैंने बोला रूरल कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन, रूरल बढ़ रहा है बट रूरल से 1/3 ही है। हाउ डज दैट मैटर, मेजर अर्बन बढ़ना चाहिए, तो डिक्लाइन हो रहा है, दैट्स अ बैड साइन। 2/3 1/3 मतलब 75% कम्स फ्रॉम अर्बन, 25% कम्स फ्रॉम रूरल। ये तुमको डेटा पॉइंट्स मिल गए एटलीस्ट बताने को। ओके, ओके गाइस, एनीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? Sir, not a Hello, news sir. specific, but I have just an update regarding the retail company Arvind Fashion, since I'm tracking. So results were out yesterday. So just an update on the results part. So the Q2 FY25 results were out yesterday, where the Arvind Fashion has been reported the top line growth of 8.5% year on year and 33% quarter on quarter. So, and this was mainly driven by the adjacent categories like women's wear, which posted a double-digit growth year on year basis. And if I say for the women's wear, so women's wear consists of the 38% of the market segment. And 38%? 38%, yes. अच्छा, ओके। And talking about अरविंद the का है या ये अरविंद का है या पूरे इसका बोल रहे हो तुम, इंडस्ट्री का बोल रहे हो? नहीं, अभी तो पूरे इंडस्ट्री का बोल रहा हूँ मैं। वुमेन 38% Okay. is of overall industry. Industries, okay, okay. हाँ. And if I say about the numericals, the COGS were up by 490 basis on quarter, and remains flat on year on year to 50%. And they have posted the highest ever quarterly EBITDA, which was 1623 million, which was again up by 70 basis and 90 basis year quarter and year on year respectively to 12.7%.
Pet were up by 210 basis points and 10 basis quarter on quarter and YOY. If I say for the other information, like retail like to like growth was up by 4.6% despite of a muted environment. And the about the channel wise performance, if I say that online D2C business grew 40% year on year, which includes the marketplace as well as the e-commerce and the portals which they have, which is the NNN now, named as NNN now, whereas wholesale channel was a bit sluggish in the growth. So if I say so about the year-on-year comparison of the channel mix for the Arvind Fashion, so 37% is channel mix is by retail, and the online is now 30% in Q2 FY25 as compared to 27% in last last Q2 FY24. And where the again the wholesale channel has been as I said, wholesale channel has been slowed down, so now it consists of 33% versus 36% year on year. So again the e-commerce and the online has been growing. We are seeing on the changes on the year on year basis as well. And again I say in terms of the expansion, so they have a gross addition of 27 EBOs in Q2 FY25. So their EBO count now is at 954, which was EPS का सुन के है ना, 931. what is Sorry, the full form of EPS? EPS का full form क्या है? exclusive brand outlets. अच्छा, एक्सक्लूसिव, हाँ सॉरी, एक्सक्लूसिव का नाम, ओके फाइन। So now their count stood at 954 as of Q2, which was 931 in FY24. Overall FY24, it was 931. So now it's with this addition, store count stood at 954. And if I say for the collaborations, for the Q2, so for the US Polo, which the brand, the major brand for them, so they have now collab with the Highness Pacho of Jaipur Royal Family for the USPA, and for the Flying Machine, which they are trying to renew the turnover of the Flying Machine brand. So now which is into the youth oriented casual wear. So now they have recently signed up with the Ori as a new brand ambassador to target the Gen Zs. अच्छा, वो और ही वो Ah, सब में the दिखता है, वो ही है influencer शायद। one. Okay, Ah, influence। so they have वो तो recently सब signed up पार्टीज में with होता him है वही है for. ना, जो Sorry. पार्टीज में होता है वही वाला ना, वो जो हाँ वही पार्टीज में वही होता है वाला वही वाला ना। वही वाला. So they have also given, they have signed up basically Ori because to target the interest among the Gen Zs. अच्छा, ओके। And talking about the segment or the business part ahead, so they are expecting that casualization trend continues to stay strong. Also, with the premiumization will be growth. Key growth will be the premiumization, and the demand are expected to recover in H2 FY25, and because of the festive season and the strong wedding calendar, because now there are many weddings will be starting टाइम from लग the रहा है। month of November. करेक्ट। So if we say अच्छा, वो like भी if है ना, we वेदांत, वेदांत हाँ फैशन भी है ना इसमें। so like if that's what I was saying, that if we say for the wedding calendar, so we have this Arvind is there, another is Vedant Fashion is there, Manyavar is there. I mean, is the नहीं, Vedant वेदांत Fashion एंड मान्यवर with आर द सेम। वो ही है, हाँ and we have the Raymond as well, where they are into also ethnic हाँ, part. एथनिक वेयर, हाँ करेक्ट करेक्ट। So for the like if we want to see for the wedding, so this can be the into focus for the after next quarter, like Q4, we can see the results of Q3. अच्छा, ये भी न्यूज में भी आया कि अरविंद फैशन टारगेट्स 1,000 करोड़ रेवेन्यू फॉर फ्लाइंग मशीन एंड फॉर फ्लाइंग मशीन, हाँ। हाँ लेकिन वो लोग ने बोला था इट विल टेक टाइम, लाइक सिंस अभी इट्स कितना है? किसका. अभी कितना आया है फ्लाइंग मशीन का, अभी कितना रेवेन्यू है? नहीं वो लोग ने वो स्पेसिफिकली एक सेकेंड लेट मी चेक फ्लाइंग मशीन पर्टिकुलरली, अगर वो लोग ने दिया है तो, क्योंकि अब तक तो वो लोग ने टारगेट्स नंबर्स. डबलिंग, हाँ लिखा है इसने, टारगेट्स डबलिंग हाँ फ्रॉम सर, 500, 500 करोड़। 500 करोड़, हाँ। तो ना, सी व्हाट वी गॉट ना, वो ये रहेगा। अनिकेत, जब ट्रैक कर रहे हो तो हाँ अरविंद फैशन, ये अरविंद फैशन का है ना? है? हाँ अरविंद फैशन. तो अरविंद फैशन में नाउ यू नो कि 4,000 करोड़ में 500 करोड़ आता है तुम्हारा
फ्लाइंग मशीन है, करेक्ट? And major is the US 2000 crores. 2000 करोड़। तो तुम्हारा वाला ये आ गया ना तुमको, रेवेन्यू ब्रेकअप आ गया। Revenue breakup आ गया. बड़े लोग दे, others also see this is how the data are found. Every time revenue breakup is not given in the in your annual report or quarterly report. This is how we got 500 crores. Now there is a news that it says that the flying machine revenue is 500 crores. 500 crore of 4,400 is almost 20%. 20% comes from flying machine and 2,000 crore US Polo से। तो almost 50% comes from US Polo. You got the breakup। दो तो मिल गया। US Polo से 50% है। हाँ, 2000 crore का वो लोग ये है net selling value. Acha, so this is how you got. So US Polo is a bigger brand of Arvind comparatively others. So 500 अगर to be precise, 5,000 divided by 4259 gets you around 11%, but not 20%. 11 but 12% is coming from your flying machine. तो ये वो they are planning. So जब forecasting करोगे तो ना forecasting, okay, I will tell you this is planning to double in कितने साल लिखा है क्या ना, कितने साल में डबल करना है? कौन सा नहीं वाला? सर, वो नहीं बता, कौन सा वाला सर? Targets नहीं doubling the बताया सर। revenue of, targets doubling, Flying ये उसका machine. flying machine का, हाँ। Next 3 to 4 years. 3 to 4 years. So now how do you get the growth rate is ये 500 करोड़ अभी है and he is estimating to be 1,000 crores, correct? Now वो बोल रहा है कि ये होगा 4 साल में। तो अगर तुमको इसका ग्रोथ लेना है, what you do is तुम्हारा, अच्छा you can also do this RRI। RRI is a CAGR formula। नंबर ऑफ पीरियड पता है 4 years में बोला है। प्रेजेंट वैल्यू इज 500, फ्यूचर वैल्यू इज 400। जब फोरकास्टिंग करोगे तो तुमको पता है इसमें 18-19% ग्रोथ लेना है, मतलब अप्रोक्सीमेट 20%। राइट? जब फोरकास्टिंग करोगे तो तुम हर साल जो ग्रोथ लोगे, अज्यूमिंग कि 20% से बढ़ना चाहिए, फिर हमको वो हर साल चेक करना है जब भी रिजल्ट आते हैं तो ये हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ 500 ये साल है, तो FY25 का योर अजम्पशन शुड बी अराउंड 1 प्लस ये 20%। तो ये FY25 का कि 594 मतलब 600 करोड़ होना चाहिए। तो 600 करोड़ साल का, तो क्वार्टर का कितना हुआ? तो क्वार्टरली इट शुड एटलीस्ट डू 150 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। तो यू गॉट योर क्वार्टरली अजम्पशन एज वेल। और ये आना चाहिए व्हेन यू नेक्स्ट क्वार्टर पे देखना कि 150 करोड़ आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। इसके लिए आई हैव सेड ना 6 months ऑफ, इफ यू स्टे विथ मी फॉर 6 months, ये तुमको सब समझ में आ जाता है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच नो वन डज इट। आई हैव interviewed so many students, sir, I have made models, I have made reports, hire me, etc. I have CFA, I'm correct, I am not saying that you have not done it, it's a good thing that you have done it, but इसका मैं क्या करूँ? तुम्हारा बना के हो गया, तुम यू आर नॉट ट्रैकिंग। एक बार कभी बनाया होगा कॉलेज में क्लासेस में, दैट्स इट। उसी पे तुम बोलते हो, फिर बोलते हो कि मैंने आज कल एक स्टूडेंट था सर, मैंने 5 अलग अलग कंपनी अलग अलग सेक्टर पे मॉडल बनाया। तुमको क्या पता टाटा स्टील का मॉडल बना, स्टील में क्या चल रहा है? डू यू इवन नो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टील इंडस्ट्री? यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन टाटा ऑटो इंडस्ट्री? एक एक टाटा मोटर्स का बना, एक टाटा स्टील का बना, एक आइशर मोटर्स का बनाया, एक उसने पावर का बनाया। मतलब डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेक्टर? नहीं सर, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने बना दिया। तो ऐसा होगा तो नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके। सर, हाँ हाँ सर। हाँ सर, अनिकेत को जिसने जो बोला है उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ उन्होंने सेफोरा को बेच दिया है। मे भी आपको पता होगा, इनका जो ब्यूटी किसको? ब्रांड था अरविंद फैशन का, हाँ और एड हर्डी और एयरपोस्टल, ये जो दो ब्रांड था, शायद इन लोगों ने होल्ड पे डाल दिया, मतलब इस पे और एक्सपेंस नहीं करेगा ये लोग। तो ओके। किस पे किस शायद पे? आई थिंक ये तीन। हाँ, कौन से ब्रांड की बात की? एड हर्डी और एयरपोस्टल, दो ब्रांड है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस पे और फर्दर मतलब एक्सपेंडिचर नहीं करेगा ये लोग। और सर मेरे तरफ से भी है, हाँ सर सियाराम जो है वो 40 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है गारमेंटिंग सेगमेंट में। करेंटली उन लोगों का 15% ऑफ रेवेन्यू है, और उन लोगों ने एक न्यू ब्रांड के साथ आ रहा है, जी कोड, जेन जी को टारगेट करने के लिए वैल्यू रिटेल में। वो मतलब मेन वुमेन किड्स वेस्टर्न वेयर और एथनिक वेयर कैटेगरी में आएगा। और उन लोगों ने 4 स्टोर खोला है अभी बेंगलुरु में, और जो प्राइस पॉइंट रहेगा वो वही स्टैंडर्ड, मतलब जो रहता है वैल्यू रिटेल का 149 to 999।
और बाय द एंड ऑफ द ईयर 25 स्टोर वो लोग कर्नाटका में खोलेगा। और दो फॉर्मेट आने वाला है, एक 4,000 to 6,000 स्क्वायर फीट और एक 7,000 to 9,000 स्क्वायर फीट। And they wanted to refresh. They said they will refresh 25% of the inventory weekly. And the value retail segment is expected to be $170 billion market by 2026, and it is a 15% CAGR if you look at 2023, which was $111 billion. And sir, I feel that players like Zudio, Reliance, Reliance Retails, Ustra, I think AVFRL's Style Up, Shoppers Stop, in Tune are already competing with each other. And also, sir, V Retail is also planning to increase their stores from 107 to 250 over the next 3 years. They want to invest 120 crore, out of which 70 crore towards capex, and remaining 50 crore will be used in working capital. So, sir, currently they operate in 18 states. Going ahead, they are planning to increase their presence in state like Karnataka, Goa, West Bengal. So 15 to 20% of the new store will be in new region. They want to take the product in-house product development from 30% to 70%. V2 Retail is expecting to close this year with 1,800 crore revenue. So they are saying they will close with 1,800 crore revenue in FY 2024. The revenue was 1,160 crore. Sir, in quarter one, they have done 415 crore. In quarter two, they have done 380 crore. Management of V2 Retail saying that they want to grow at a rate of 50% CAGR for next 5 years. At the EBITDA will be around 18 to 19%. सर क्या कर रहे हैं वो अलग? सर What वही are they doing? expansion कर रहे हैं सर. Their store is around 107 store currently they have, and they want to take it to around 250 over the next 3 years. अच्छा तो सर तो बेसिकली एफआरएल्स में ना, एफआरएल्स में दिया टॉकिंग. हाँ 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 sir, I feel that value retail has a big room to grow, because it is not a new segment. We already have street side sellers selling in the range of 499 to 999, and the Correct. organized sector can give consumer with a better feel, with a brand and a low price. And one plus point is that they can give a better product with same cost, because there is a economies of scale. And sir, uh, shopping malls are no more fancy place to shop. It is also a good point, because normal people. I visited one of the very small cities in West Bengal. There was a shopping mall, and I saw that very normal people, very moderately dressed people are shopping in shopping malls. So I think it is going to play a value retail is going to play a big role in retail Probably. in coming few years. आई एम तो वेरी बुलिश ऑन द अपैरल सेक्टर. मुझे पता नहीं था ये अपैरल में भी है. द अपैरल पीपल आर जस्ट स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग. ऐसा है, सब है ये. ऐसे आई डोंट थिंक इन द वेस्ट इधर नहीं है ना अनिकेत, इधर अपने इधर नहीं है ना ये सब ब्रांड्स. आई हैव नेवर सीन इट, मतलब ऑब्जर्व नहीं किया मैंने. क्या सर, V2 रिटेल? हाँ हाँ. ये सर V2 रिटेल इधर क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल था, इधर इस नॉर्थ साइड में. साइड ज्यादा है. हाँ हाँ. निष्ठा होती, निष्ठा चली गई, वो शी वाज द वन. उसको पता है नॉर्थ. एनीवन फ्रॉम नॉर्थ? Do you know about this? I don't know. I have not seen it here. If anyone हाँ looks at सर, over here, आसपास किधर दिख गया मुंबई में या वेस्ट में, just they are saying that they will introduce the pilot in Delhi NCR over the next 2 3 months. So I think they are not in Delhi also. So I think they will be not in Mumbai also, if they are not in Delhi. अच्छा अच्छा ऑफिस कहाँ पे है this office? मुंबई में तो नहीं है. I don't know. I I particularly don't know they are in Delhi or not, but they are saying that the new expansion plan they will start from Delhi. probably I think this brand ना, ये सब ना, I think ना, मुझे नहीं पता.
ये सब ब्रांड्स लोकल स्टोर्स के पास भी दिखता है, स्ट्रीट वेंडर्स एंड ऑल, उनके पास भी ये ब्रांड्स होते हैं। नॉट ये एग्जैक्टली नहीं, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रीट वेंडर्स, बट छोटे छोटे होते हैं ना शॉप्स। हाँ आई फील सो, आई फील सो, क्योंकि सर, आई हैव सीन देयर शॉपिंग मॉल्स, दे आर क्वाइट बिग एंड अच्छा, दे हैव बिग शॉपिंग मॉल मॉल्स। शॉपिंग, अच्छा, ओके, यस ग्रेट। सर। बी टू रिटेल, ओके, फाइन, 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 ग्रेट वन। सो आई एम तो बुलिश, थैंक यू फॉर नोइंग दिस। ये तो काफी अच्छा है। अनिकेत, तुम ये भी देख लेना इसके साथ एंड सर देयर स्टॉक तुम्हारे। प्राइस हैव ग्रोन आल्सो इन हाँ, लास्ट it's 1 year। छोटा कंपनी है, काफी स्मॉल कंपनी है, बट स्टिल इसका। हाँ, तो व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कंपनीज, यू हैव टू बी श्योर कि क्या चल रहा है इसमें। यस सर। बस इसके लिए बैलेंस शीट समझना बहुत, बैलेंस शीट कैश फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब कंपनीज के लिए। पेमेंट तो आई कैन इजीली बाय एंड सोच सकता है, बट ये सब कंपनीज के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। Sir, बट can you फेयर come again? I guess I missed. आई वाज सेइंग कि ये सौरभ बोल रहा था, एक कंपनी वी टू रिटेल है, इट इज आल्सो इनटू अपैरल्स एंड ऑल, सो एक्सपांडिंग अ लॉट। जैसे तुम अरविंद ट्रैक कर रहे थे, तो प्रॉब्ली ये भी ट्रैक करना क्या चल रहा है इसमें। दिस ब्रांड इज नॉट, आई थिंक मुंबई में नहीं है, ये मैंने देखा नहीं है। टीयर 3 सिटीज में ही है, ऑपरेट्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। और अभी दे आर प्लानिंग इनटू कम टू टीयर 1, दिल्ली में प्लान कर रहे हैं। ओके गाइस, विल साइन ऑफ फॉर सर, टुडे। सर और एक हाँ, चीज, सर हाँ आपको बताओ। मैंने टैग किया था लिंक्डइन में कल। हाँ, जो वेदांत, क्या बोलते हैं, वेदांत बोल रहे हैं, अरविंद का जो रिजल्ट आया था उस पे, तो सर देख लीजिए, आपने जो बोला था ना सही करने के लिए, देखिए अच्छा, सही किया था किया क्या है मैंने। टैग? मैं हाँ सर, मैं आपको टैग किया था। कल किया था मुझे, कल, अच्छा, कल मैं थोड़ा बिजी था। हम्म, ये देखता हूँ मैं किया ना टैग। ओके, ठीक है सर। तुम भी अनिकेत, यू ऑल्सो मेक अ कॉन्फ्रेंस कॉल रिपोर्ट और पोस्ट करो लिंक्डइन पे, डालो लोगों को जिसको है उसको, हाँ हाँ, जिसके लिए आज है। हाँ। कॉन कॉल इज एट 2:30 टुडे। अच्छा, आज है कॉन्फ्रेंस, अच्छा, ओके, हाँ। ओके, So yesterday just results were out. अच्छा, ओके। नहीं सर, अरविंद का कल था, आज अरविंद फैशन का है। फैशन का, हाँ, वही अरविंद फैशन की बात कर रहे हैं, हाँ। आज आज अरविंद ओके, फैशन का है, कल अरविंद फैशन का का, डाला हाँ था। हाँ। अच्छा, ओके, अरविंद का, ओके, फाइन गाइस, फाइन, फाइन, हैव अ नाइस डे, Thank you, सी sir. यू Thank टुमारो you. सेम टाइम। बाय गाइस, बाय बाय।